Hello students, so today we are going to start our next chapter, that is chapter number 10, Displacing Indigenous People. इस चैप्टर में हमने जो अभी हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, द कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय द यूरोपियंस एंड हाउ द यूरोपियंस डिस्ट्रॉयड द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकाज। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, यूरोपियंस हैं या एशियंस हैं, किस तरह से उन्होंने वहाँ की जो इंडिजीनियस पीपल हैं, इंडिजीनियस पीपल मीन्स द पीपल हु एक्चुअली बिलोंग टू दोज प्लेसेस, उन्होंने इसको कैसे रिप्लेस किया। एंड वी विल नॉट ओनली टॉक अबाउट अमेरिका but also Australia. So let's begin our topic now. From the 18th century, more areas of South America, Central America, North America, South America, Africa, Australia and New Zealand came to be settled by immigrants from Europe. This led to many of the native peoples being pushed out into other areas. The European settlements were called colonies. तो क्योंकि जैसे ही लोग बाहर से आते गए, उन्होंने क्या किया, जो नेटिव्स को उनको साइडलाइन करते गए, जैसे जो कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। और जब भी यूरोपियन सेटलमेंट्स आके एक कंट्री पर अपना हक जताते थे एंड पॉलिटिकली उसको कंट्रोल करते थे, तो उसको क्या टर्म किया जाता है, कॉलोनी। दे बिकेम द कॉलोनी ऑफ द कंट्री दैट इज टेकिंग द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ दैट प्लेस। एंड व्हेन the European inhabitants of the colonies became independent of the European mother countries, these colonies became states or countries. This means कि जैसे जैसे लोग आके सेटल होते गए अमेरिका, ठीक है, now they have made their homes there, so they don't wanted to go back to their native country, which could be England, France, Germany, Spain or Portugal. So therefore they separated themselves from their mother country and they started establishing their own government there, which are now called states or countries. For example, United States, or the name of countries like Brazil, Canada, etc. In the 19th and 20th century, people from Asian countries also migrated to some of these countries. अभी तक तो सिर्फ यूरोपियंस थे जो माइग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब एशियन जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट से भी लोगों ने वहाँ माइग्रेट करना स्टार्ट करना शुरू किया। Today, these Europeans and Asians from the majority in these countries and the number of the native inhabitants are very small because native population बची ही नहीं है। इसलिए जितने भी सारे हम आज देखते हैं inhabitants, especially of the Americas और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि ज़्यादातर जो inhabitants है, either they belong to Europe or to Asia. And the native population is hardly seen in towns and people have forgotten that they once occupied much of the country because it has been taken over by the Europeans and the Asians. Now let's begin an important topic, that is the European imperialism. Imperialism means gaining the political and economic control of a particular country. So हमने देखा था कि पिछले चैप्टर में सबसे पहले स्पेन एंड पोर्चुगल थी जिन्होंने कि अमेरिका को डिस्कवर किया था और वहाँ की जितनी भी कॉलोनीज़ है उस पर उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। बट वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन द एंड ऑफ द 8th चैप्टर दैट they had very limited control and the new countries came to Americas like England, France, and they had much more control than the Spaniards and the Portugal. So therefore from the 17th century onwards, the Spain and Portugal empire in America did not expand. From that time, other countries like France, Holland and England began to extend their trading activities and to establish colony in America, Africa and Asia too. From the 18th century, it became obvious that while it was the prospect of profit which drove people to establish colonies, there were significant variations in the nature of the control established. तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से जो कंट्रोल था वो हर जगह अपने तरीके से हर किसी ने इस्टेब्लिश किया, विच मीन्स दैट the strategies that were applied by the Britishers to gain control over the Americans does not include the same strategy that they used to control the people of India. So therefore when they went to different places, according to the place they adopted certain strategies to gain control over
those lands. Now we will discuss how in each continent they establish their different strategies to take control of the different countries.